Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you here in this lecture number 45 for that topic human reproduction. Now we have been learning regarding the structure of gametes, particularly the male gamete we have started to learn. With the help of this figure, I tried to explain that sperm or spermatozoa structure partly in the last video. So do refer my earlier video to learn the structure of sperm very properly. Do watch that. Okay. Now there we have seen that male gamete sperm is a microscopic structure, elongated as shown in this figure. And what is the size I told you? Near about 55 to 60 micrometer. Micrometer यानी micron. That is near about 0.055 millimeter. Who discovered this sperm? अगर लर्न किया है तो Anton van Leeuwenhoek discovered the sperm for the first time in 1677. And how many sperms are there in a single ejaculation done by the man during coitus? तो कितना होता है वो? That contain about 200 to 300 millions of the sperms. Not 200 to 300, 200 to 300 millions of the sperms in a single ejaculation. तो चलो ये स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया है, we have said that there are different parts of that sperm, particularly the head, neck, middle piece and tail. Longest part is no doubt the tail. That head has got the anterior fusiform structure, swollen structure, and the top of that head is having one cap-like structure. What is the name of that cap-like structure? It is called as the acrosome. Having the fibular sheath. Acrosome क्या बनाता है? Lytic enzymes. They are called the high hyaluronidase. What is the use of that enzyme? It penetrates the egg. That with the sperm can penetrate the egg only and only due to the drilling done by that particular acidic enzyme of that acrosome. What is the name of that acidic enzyme? High hyaluronidase. ये आता है exam. Then another thing we have seen that haploid male nucleus is there with genetic material. And that haploid male nucleus is very essential part there that is present in the head, required for fertilization. Then centrioles are present in the very short neck I told you in the last lecture. Proximal centriole and distal centriole. Okay. Then the next part is middle piece. A very important part of that sperm, without which the sperm will not get the energy. Why for? Because this middle piece is containing large number of many spirally arranged mitochondria. Many spirally arranged mitochondria are present there, and they are arranged spirally around one axis there, and that axis is known as what? Nebenкern. So Nebenкern और ये अगर match the following आता है तो definitely Nebenкern is related the term with sperm. ये एक axial filament ऐसा है Nebenкern जिसको ये spirally coil किए हुए बहुत सारे mitochondria है. And you know that mitochondria is acting as a powerhouse of cell. So the fuel engine of spermatozoa is, correct answer is middle piece. ये जो फ्यूएल इंजन है जिसकी वजह से स्पर्म मोटिलिटी दिखाता है, स्विमिंग कर सकता है, वो किसकी वजह से है? Because of the middle piece containing mitochondria. And that's why this middle piece is also called as what? This is called as a fuel engine of that particular sperm. Okay. अब ये डिस्टल सेंट्रियोल से ये एक्सियल फिलामेंट चालू हो गया है. दिस एक्सियल फिलामेंट उसको ही निबेनकर्न कहा है मिडल पीस में. दैट एक्सियल फिलामेंट हैज एक्सटेंडेड एंड दैट इज कवर्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक शीथ. ये बाहर साइटोप्लाज्मिक शीथ है. ओके, दिस इज साइटोप्लाज्मिक शीथ which encloses that axial filament and that is forming a very long tail. ये बहुत ही लॉन्ग टेल यहाँ पे हो जाती है. दैट टेल इज नियर अबाउट 50 micrometer, 50 micron in the length, near about.
और वो टेल की वजह से ही मूवमेंट है. The movement of the sperm is only and only with the help of that tail, nothing else. And only at the tip, that particular part which we have named it as end piece, you will watch that cytoplasmic sheath is absent there. Only at the tip, the cytoplasmic sheath is absent. That part is called as end piece. Okay, that is containing only axial filament. And now this tail is helpful for giving the motility to the sperms. Sperms जो मोटाइल होते हैं, वो जो स्विमिंग करते हैं, तो वो टेल की वजह से हो जाता है. एंड दैट स्पीड ऑफ दैट स्पर्म इन द नॉर्मल केस कितनी होती है? 1 to 3 मिलीमीटर पर मिनट. जब वो वजाना के अंदर आ जाएंगे तो वहां पे जो वो घूमेंगे, एंड व्हेनेवर दे विल गो अप टू द ओविडक्ट थ्रू द यूटेरस, सर्विक्स, वजाना, सर्विक्स, यूटेरस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाके पहुंचेंगे, तो वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट टेल, एंड दे आर हैविंग द स्पीड देयर, मोटिलिटी देयर. क्या स्पीड है उनकी? दैट इज वेरी विगरस एट देयर लेवल. वो है 1 to 3 मिलीमीटर पर मिनट. ओके, वेरी क्लियर. Then full body of the sperm is covered by plasma membrane, that we know. अब यहाँ पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आते हैं सिंगल इजैकुलेशन में, मैंने कहा, पर उसमें एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप. एटलीस्ट 60% स्पर्म्स. ओके, एंड एटलीस्ट 40% स्पर्म्स मस्ट शो vigorous motility. Then and then only the fertilization is possible. Actually the sperm cell can survive for 72 hours. उसका सर्वाइवल पीरियड जो है वो 72 आवर्स है, यानी लगभग 3 डेज. बट द एक्टिविटी फॉर फर्टिलाइजेशन लास्ट फॉर ओनली 24 आवर्स. ओके, उनकी जो मोटिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, विगर है फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट कैन लास्ट फॉर 24 आवर्स ओनली. Okay, and that is having actual life period of 72 hours. Very simple. अब इसमें, इसके पहले भी हमने देखा था पर्टिकुलरली ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है. माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलीजिंग द एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई दैट मिडल पीस इज नोन एज द, व्हाट इज दैट, फ्यूल इंजन. टेल का फंक्शन क्या है? टेल कैन गिव द लैशिंग मूवमेंट एंड मोटिलिटी. नेक का फंक्शन क्या है? Neck provides the centrioles, and with the help of that centrioles, that cell division can occur in the zygote after fertilization. We know, I told you that ovum is lacking the centrioles. और इस acrosome का function क्या है? It produces the lytic enzymes without which the act of fertilization would not be possible. Okay, and then what is that haploid nucleus? अब हमें ये मालूम होना चाहिए, ये हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस है, यानी इट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स. उसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम और 22 ऑटोसोम्स and 1 Y chromosome will be there. That X and Y are the sex chromosomes, you know, in the genetics. So whatever the number of sperms are there in the single ejaculation, say 200 million, 300 million, what it may be, exactly 50% will be of X type feminine sperm and 50% will be of Y type masculine sperm. जिस स्पर्म को X क्रोमोसोम है उसे कहते हैं फेमिनाइन स्पर्म. टर्म याद में रखो, फेमिनाइन स्पर्म, फेमिनाइन स्पर्म. और जिसको Y क्रोमोसोम है उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन स्पर्म. सो इन सिंगल, अगर मैं ऐसा MCQ आपको पूछूंगा that in a single coitus, during the coitus, a single ejaculation of male will have approximately what number of masculine sperms? तो 200 to 300 मिलियन जो है वो आंसर नहीं आएगा, उसका 50% कर लो, 100 to 150 मिलियन आएगा. ओके,
व्हाट नंबर इज देयर ऑफ द फेमिनाइन स्पर्म, तो वो भी एग्जैक्टली 50-50%. And that's why the chances are 50-50% after fertilization. During fertilization, it is only decided whether that embryo will grow into a boy or into a girl. Okay? तो ये सब चीजें अच्छी तरह से ध्यान में ले लो. उसमें भी मैंने इसके पहले भी मैंने कुछ टर्म्स दिए थे आपको. ऑलिगोस्पर्मी. ऑलिगोस्पर्मी का मतलब क्या आता है? When the sperm count is very less in the semen, in the ejaculation. अगर एखादा मैन जो है उसका जो इजैकुलेशन होता है उसमें सीमेन का जो अमाउंट है उसमें कंपैरेटिवली ये 200 to 300 मिलियन स्पर्म नहीं है, बहुत कम है, 20 मिलियन लाइक दैट, देन इट इज कॉल्ड एज ऑलिगोस्पर्मी. ऑलिगोस्पर्मी यानी वेरी लेस स्पर्म्स. अजूस्पर्मी. अजूस्पर्मी भी मैंने दिया था, यानी ऑलमोस्ट absence और just negligible amount of the number of the sperms present in the semen. अगर स्पर्म्स नहीं है, absent ही है नियरली, तो उसे अजूस्पर्मी कहते हैं. एंड अस्थैनोस्पर्मी का मतलब क्या है? दैट व्हेन द स्पर्म्स आर नॉट हैविंग दैट विगरस मोटिलिटी. स्पर्म को अगर विगरस मोटिलिटी नहीं है तो उसे कहते हैं अस्थैनोस्पर्मी. सो अच्छी टेराटोस्पर्मी भी है. टेराटोस्पर्मी में when the sperms are not having the normal size and shape, they are abnormal morphology अगर उनको है, उसे कहते हैं teratospermy. In all these 4 conditions, the chances of that man to become a father will be very very less or 0. फिर वो मैन का जो सीमेन है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता और फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता. So I hope you have understood all and each and every point what I have discussed. So you can again rewind and learn that things there properly. Okay? So do like and share this video to your friend circle and do subscribe to my Cartesian Biology and Cartesian Biology Shorts channel. We shall meet again in the next video. Till then, take care and keep learning with me. Thanks.